Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Over here, I welcome all of you to my YouTube channel. As you know, that we are discussing poetry, modern poetry, course 5006, and in our today's lecture, we are going to discuss unit number 8, that is W.H. Auden and William Carlos William. First of all, we will discuss W.H. Auden. The full name of W.H. Auden is Wystan Hugh Auden. Wystan Hugh Auden इसका पूरा नाम है. इसको W.H. Auden कहते हैं. W.H. Auden, whose full name was Wystan Hugh Auden, was one of the most important poets of the 20th century. ये 20th century का बहुत एक important 20th century का important poet है. He was born in England in 1907, 1907 में पैदा हुआ, and later moved to United States, और फिर अमेरिका चला गया, where he lived for many years. Auden became famous because he wrote poetry. ये अपनी पोइट्री की वजह से फेमस हुआ. About the real problems of the people, लोगों के real problems की वजह से, and society. His poems often discuss, इसकी poems discuss करती हैं war, politics, social injustice, human suffering, love and religion. He lived during the time of World War II, so his poetry shows the fear. इसकी poetry में डर है, confusion of that age. Auden's writing is serious, संजीदा writing है, and thoughtful, and he often gives a moral lesson, इखलाकी सबक देता है. One of his famous work is फ्यूनरल ब्लूज. एक इसका फेमस वर्क है जिसका नाम फ्यूनरल ब्लूज है, जो कि एक पोएम है अबाउट डीप ग्रीफ, गहरे गम के बारे में, एंड सैडनेस आफ्टर द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, इसके किसी प्यारे की मौत पर. अनदर इम्पोर्टेंट वर्क इज सितंबर 1, 1939. ये पोएम का नाम है, विच इज अ पोएम अबाउट द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. ये दूसरी जंग अजीम की स्टार्ट के बारे में है, एंड द एंजाइटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और जदीद दुनिया की जो परेशानियां उसके बारे में. ही आल्सो रोट द अननोन सिटीजन, विच इज अ पोएम. ये एक पोएम है दैट क्रिटिसाइजेस मॉडर्न सोसाइटी फॉर ट्रीटिंग पीपल, कि वो ये लोगों को ट्रीट करती है लाइक नंबर्स की सूरत में, इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उनको इंसान नहीं समझती. इन शॉर्ट, W.H. Auden पोइट्री इज इम्पोर्टेंट. इसकी पोइट्री बहुत अहम है, बिकॉज इट स्पीक्स अबाउट ह्यूमन इमोशंस, क्योंकि ये इंसानी जज्बात की, एहसासात की, स्ट्रगल की बात करता है, जदीद जिंदगी की, इन अ स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल वे. अब हम विलियम कार्लस विलियम को डिस्कस करेंगे. विलियम कार्लस विलियम was a great American poet who was also a medical doctor. He was born in 1883 in the United States. Williams is famous because he did not write about kings. इसने किंग्स के बारे में नहीं लिखा, इसलिए फेमस हुआ. हीरोज के बारे में नहीं लिखा, और क्लासिकल स्टोरीज. Instead, he wrote about common people, आम लोगों के बारे में लिखा, डेली रूटीन, लाइफ के बारे में, एंड सिंपल ऑब्जेक्ट. ही बिलीव्ड दैट पोइट्री शुड बी रिटन इन सिंपल अमेरिकन स्टाइल, कि पोइट्री सादा अमेरिकी अंदाज में लिखनी चाहिए, not in difficult traditional language. His poems are usually short, clear, and full of images. He wanted to show that even ordinary things, के जो आम चीजें होती हैं around us, हमारे आसपास, can be beautiful, खूबसूरत हो सकती हैं, and meaningful. His famous work is The Red Wheelbarrow. Red Wheelbarrow इसकी famous poem है, which is a short poem that shows how a simple object like a wheelbarrow, एक wheelbarrow की तरह एक सादा सी चीज जो है, can hold great importance, उसकी भी बहुत अहमियत हो सकती है in life, daily life जिंदगी में. Another important work is This Is Just to Say,
विच इज द पोएम, ये एक पोएम है रिटन लाइक अ स्मॉल अपोलॉजी, जो कि एक छोटी सी जो है ना अपोलॉजी है, मतलब ताज़ियत है, नोट है अबाउट ईटिंग प्लम्स, बट इट शोज नेचुरल ह्यूमन डिजायर, लेकिन ये नेचुरल एक ख्वाहिश को पेश करती है इंसानी एंड सिंपल इमोशंस। विलियम्स पोइट्री टीचेस अस, इसकी शायरी हमें ये बताती है टू नोटिस स्मॉल थिंग, कि छोटी छोटी चीजों को नोटिस करो, एंड अंडरस्टैंड दैट रियल ब्यूटी एग्जिस्ट, कि जो रियल ब्यूटी है ये अपना वजूद रखती है इन सिंपल लाइफ। देयरफॉर he is considered a major modern poet because his poetry is natural, realistic, and easy to understand. अब हम स्टाइल को देखते हैं, ऑर्डन और विलियम कार्लिस, इन दोनों के स्टाइल को। The style of modern poetry, especially in the work of Auden and William Carlos William, is different. दोनों का style different है from old traditional poetry. In traditional poetry, poets often used difficult vocabulary. रवायती पोइट्री में difficult vocabulary यूज की जाती है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस होती हैं, एंड फिक्स्ड रूल हैं राइम के, रिदम के। ओवर मॉडर्न पोइट्स फोकस्ड ऑन रियल लाइफ एंड यूज सिंपल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। ऑर्डन स्टाइल इज सीरियस, ऑर्डन का अंदाज संजीदा है, इंटेलेक्चुअल है। ही राइट्स इन अ वे दैट मेक्स द रीडर थिंक डीपली, ये ऐसे लिखता है कि पढ़ने वाला बहुत गहराई में सोचता है। He often uses irony, तंज इस्तेमाल करता है, criticism, तनकीद, to show the weakness of society, माशरे की वीकनेस को दिखाने के लिए। एंड his poetry carry strong ideas, इसकी पोइट्री में बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के आइडियाज एंड मैसेजेस। विलियम स्टाइल इज वेरी डिफरेंट, इसका स्टाइल बड़ा मुख्तलिफ है। his poetry is short, simple and based on imagery, images पर बेस करती है। he does not explain too much, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। इंस्टेड ही यूजेस पिक्चर्स इन वर्ड्स, अल्फाज की तस्वीरें इस्तेमाल करता है, सो दैट द रीडर कैन फील द मीनिंग, ताकि पढ़ने वाला जो है वो मीनिंग को फील करे। विलियम राइट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, विलियम कार्लिस जो है ये सादा जबान, आम जबान में लिखता है। प्रेजेंट सिंपल ऑब्जेक्ट्स, सादा ऑब्जेक्ट को पेश करता है एज सिंबल्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की अलामात के तौर पर। इन शॉर्ट, ऑर्डन स्टाइल ऑर्डन स्टाइल फोकसेस मोर ऑन आइडियाज, ऑर्डन का अंदाज ख्यालात पर फोकस करता है एंड सोशल इश्यूज, while विलियम स्टाइल फोकसेस मोर ऑन इमेजेस, जबकि जो विलियम का अंदाज है वो इमेजेस और सिंपल मोमेंट्स ऑफ डेली लाइफ पर फोकस करता है। अब हम इन दोनों के थीम्स को देखेंगे। The themes of W. H. Auden's poetry are mostly connected with the problems. इसकी पोइट्री के जो थीम हैं वो कनेक्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ, मॉडर्न वर्ल्ड के। ही रोट अबाउट वार, इसने जंग के बारे में लिखा, पॉलिटिक्स के बारे में, स्पेशली द डिस्ट्रक्शन, तबाही के बारे में, एंड फियर और डर के बारे में, काज बाय वार, जो जंग से होता है। He also talked about society, इसने मुआशरे के बारे में बात की, क्रिटिसाइजिंग, तनकीद करते हुए, हाउ मॉडर्न लाइफ बिकम्स सेल्फिश, कि जदीद जिंदगी सेल्फिश कैसे कैसे हो जाती है, एंड अनफेयर। ऑडन ऑफन शोज, ये अक्सर दिखाता है, ह्यूमन सफरिंग्स को एक्सप्लेनिंग, बयान करते हुए, हाउ पीपल फील लोनलीनेस, कि लोग तन्हाई कैसे महसूस करते हैं, फियर, डर एंड सैडनेस इन डिफिकल्ट टाइम। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इन हिज पोएट्री इज लव, मोहब्बत एंड लॉस, और खो देने का एहसास, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स deep emotions and pain when someone loses a loved one, जब कोई करीबी को खो देता है। He also touches the theme of religion, मजहब के थीम की बात करता है, and faith, showing that human, ये जो इंसान है, नीड moral responsibility, इन्हें इखलाकी जिम्मेदारी का भी पता होना चाहिए, एंड spiritual direction. On the other hand, विलियम कार्लस विलियम्स मेनली रोट, लेकिन जो विलियम कार्लस विलियम्स है इसने बुनियादी तौर पे लिखा सिंपल और प्रैक्टिकल थीम्स के बारे में। इस पोइट्री फोकसेस ऑन डेली लाइफ के बारे में फोकस करती है, ऑर्डिनरी पीपल एंड कॉमन एक्शंस। ही आल्सो यूजेस नेचर,
ये नेचर और कॉमन ऑब्जेक्ट्स के इस्तेमाल करता है टू रिप्रेजेंट मीनिंग and his poems, इसकी जो poems हैं, teach us to find beauty in small things. Another major theme of his poetry is American identity, अमरीकी शनाख्त, because he writes in an American voice. वो अमरीकी की आवाज में लिखता है and shows American culture, अमेरिका का कल्चर और लाइफ को दिखाता है. ओवरऑल ऑर्डन थीम्स आर सीरियस. ऑर्डन के थीम संजीदा सोशल लाइफ के बारे में, while Carlos themes are simple, realistic, and close to everyday life. तो स्टूडेंट ये हमारा पूरा लेक्चर था. दैट वाज आवर लेक्चर ऑन eighth unit W. H. Auden and William Carlos William. I'm sure that you have learned the whole thing, which I have tried to teach in the best, easiest way. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share your comments in the comments section. Thank you very much.